Yes, now children will be proceeding 11th question. In 11th question, let x is equals to cos theta. Then tan inverse of root of 1 plus cos theta minus 1 minus cos theta upon root of 1 plus cos theta plus root over 1 minus cos theta. Now if you know, I'm just solving 1 plus cos theta, if you remember cos 2 theta का formula या cos 2a का formula. Cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta होता है और cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1 होता है. सो 1 प्लस में क्या मिलेगा हमें 2 cos square theta by 2 और 1 माइनस cos theta में 2 sin square theta by 2. So we will be using it here. Okay, and since root is there, so I am proceeding it here. Tan inverse of क्या मिलेगा root 2 cos theta by 2 minus root 2 sin theta by 2 अपॉन में root 2 cos theta by 2 plus root 2 sin theta by 2. सो यू जस्ट सी root 2 कॉमन है तो हम root 2 को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, रिमूव कर दिया. अब हमें क्या मिला cos theta by 2 माइनस sin theta by 2. cos theta by 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा 1 माइनस tan theta by 2 1 प्लस tan theta by 2. इसको चेंज कर सकते हैं बेटा. अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना सीखो पेंसिल से tan पाई बाय 4 और यहाँ पर इंटू कर दें tan पाई बाय 4. तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा. tan a माइनस बी मतलब a क्या है पाई बाय 4 और b क्या है माइनस थीटा बाय 2. ये पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2. पाई बाय 4 और थीटा क्या है हमने यहाँ पे लिया था x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. सो थीटा इज इक्वल्स टू cos inverse of x. So put here minus हाफ लिखा हुआ है थीटा की जगह cos inverse of x which is exactly equals to RHS. Yes children, now 12th one. Okay, in 12th one you just simplify it. Let us do bring this here 9 by 4 sin inverse of 2 root 2 by 3 plus 9 by 4 sin inverse of 1 by 3 is equals to 9 pi by 8. If you observe here 9 by 4 is common or 9 is also common. So if you remove divide by 9 there is no harm in it, and if you remove 4 also 4 ones are this will be 2. Okay children, so in a simplified manner you got this. Now we'll be taking LHS. Now for LHS, to simplify it further, we have sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2. So we'll try to change it in that way. If you just think of this triangle, some people have perpendicular, this is perpendicular, this is hypotenuse. Find out base. Base क्या निकलेगा root over 3 square minus 2 root 2 का square. So कितना आएगा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 इंटू 2 8 तो 1 आया, यानी ये हमारा बेस क्या मिला 1. अब हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं. चल ये हमने अब LHS पोर्शन लिया. ओके, ये वाला पोर्शन साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाई 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 3.
इसको चेंज किया तो कॉस इनवर्स ऑफ बेस हमारा आया था 1, सो 1 अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज़ 1/3। हाँ, अब देखो ये आइडेंटिटी लग गई, π/2 ये आइडेंटिटी लग गई, क्योंकि अब हमें सेम मिला ये, दैट इज़ इक्वल्स टू RHS। कौन सी आइडेंटिटी या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई इधर? कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। Yes children, now 13th one, you have to solve for x के लिए सॉल्व करना है। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये वाली आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगा दो। 2 tan इनवर्स ऑफ x हमारे पास क्या है? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो क्या लिखेंगे हम इधर? tan इनवर्स ऑफ 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और ये इक्वल ही है। तो 2 और कोसेक क्या होता है? कोसेक इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 2 अपॉन साइन x आ जाएगा। अब आप देखो, वी कैन से कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हो गए। तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन x लिख सकते हैं ना हम लोग। फिर 2 कैंसिल, तो यहाँ पर अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये नीचे क्या है? cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन x। दैट मीन्स ये साइन और एक साइन यहाँ भी गया, तो ये क्या मिला? cot x इज इक्वल्स टू 1। अब जब cot x 1 है, यानी किसकी वैल्यू है? π/4 की। x इज इक्वल्स टू π/4 आया हमारा। नाउ 14th one children, we can bring this 2 here to make it simple। 1 minus x upon 1 plus x is equals to tan inverse of x. Since we have one property, 2 tan inverse of x is equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. So we'll be using it here. Tan inverse of 2 into 1 minus x upon 1 plus x whole upon 1 minus x upon 1 plus x the whole square. Now we can write these two portions are equal. Alright, this way. Now we'll be simplifying it. So I am just rubbing the property and doing it here. This is 2 into 1 minus x upon 1 plus x whole upon, if you take LCM you will be getting 1 plus x का square, and here 1 plus x का square minus 1 minus x the whole square, and is equals to x over here. Just put the implied sign here. Alright, now this is 2 again, 1 minus x upon 1 plus x. Here what you will be getting? A plus b the whole square minus a minus b the whole square, 4ab. So 4 into 1 into x, 4x you will be getting. So here this is main divide. If I change multiply, we have to take reciprocal. So 1 by x the whole square will go up, and here 4x. Now you change. Now you can cancel. 2 ones are 2 twos are. This is ones are, and this is gone. So you are left with 1 minus x, 1 plus x, and 2 is there, you can take it that side, 2x. Wait children, it's not visible I think. 2x. Okay, so now you can write 1 minus x square is equals to, and one more x is there, so 2x square. Now combine x square you will be getting 1 is equals to 3x square. That means x square is equals to 1 upon 3,
और x इज इक्वल्स टू 1 minute. I am rubbing it here. X is equals to plus minus 1 upon root 3. But here it is given कि x greater than 0 है. So we'll be taking x is equals to 1 upon root 3. Now see 15th one. Very easy. Sine of tan inverse of x is equals to what? When mod of x is less than 1. See children, tan inverse of x perpendicular upon base. So perpendicular is x and base x means x upon 1. So 1 is here. Then how will you find out hypotenuse? Square sum of square. So x square plus 1. Okay. Or you can write it as 1 plus x square is same thing. So we got this. Now what will be the value of sine? So let, or you just say sine of, साइन इन्वर्स ऑफ, इसको हम tan इन्वर्स ऑफ x को साइन में चेंज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो x अपॉन 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर. देन विच ऑप्शन इज देयर? ऑप्शन नंबर D you have, I think. Yes, option D would be correct. See children, now 16th one. In 16th one, again we don't have any identity of this kind, so we cannot change tan inverse. We will change, maybe the procedure will be little lengthier. So we'll take it this factor to other side. Sine inverse of 1 minus x is equals to pi by 2 plus 2 sine inverse of x. Alright, now take sine of both side. Okay, and here also sine pi by 2 plus 2 sine inverse of x. So sine of sine inverse will give you 1 minus sine x is equals to sine 90 plus theta. If you remember cos theta, so cos of 2 sine inverse of x you will be getting. Okay, now if you remember ये 2 theta है. Okay, this is 2 theta. हमारे पास फॉर्मूला है cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sine square theta. With this help you will be getting it cos inverse of 1 minus 2x square आ जाएगा. And if you still have doubt so you can ask me. तो 1 minus 2x square आ गया, and here 1 minus x, 1 minus x. So 1 if you see cancels, here minus x, here minus 2x square, minus will also go. Then x is equals to 2x square, we cannot cancel x, so 2x square minus x equals to 0. Then x is common, so 2x minus 1 equals to 0. So either x is 0 or 2x minus 1 equals to 0, which implies x is equals to half. These two values we got, but if you substitute here x is equals to half, it won't be satisfied. So x is equals to 0 is your answer. Yes children, now you see 17th one. Apply the property tan inverse of x by y plus x minus y upon x plus y whole upon 1 minus x by y into x minus y x plus y. ये क्या देगा आपको? tan inverse of, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x into x plus y plus y into x minus y. Then I am not writing the denominator, I have told you before. Now here y into x plus y minus x into x minus y. Now you see what are you getting? I am writing it here children. X square xy plus xy,
sorry, you are having here minus and here plus, minus plus. I got this idea when I saw it's not cancelling, it should cancel. माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. So see, this and this will cancel. Then you have, sorry, this is xy na, xy, so xy cancel. So you are left with tan inverse of x square plus y square upon x square plus y square, cancel. यानी tan inverse of 1 और tan inverse of 1 क्या होता है pi by 4. Option number C is correct. Okay children, thank you. This miscellaneous exercise is finished.